So we took the Thar Rocks off-roading today and we got stuck into a really slushy pit, very deep, and I was unable to pull myself out. Then I hit a button and the car elevated itself and took itself out of the pit. Oh, that's not possible. It's I'm not kidding. It happened. Wait, I'll show you. ये देखो. ഇത് വൈറ്റ് കളറല്ല അപ്പൊ അഴുക്കാവൂലേ പെട്ടെന്ന് सफेद कलर के हैं हाँ. तो खराब नहीं होएगा क्या पूछते हैं वो इजीली नहीं निकल रहा है. आदमी भी एक बुक किया था लेकिन अभी तक मिला नहीं ये गाड़ी. Now look at that, 60. You seen that 60 over there? Mad! What? अच्छा है ना? हाँ? तो कोई भी Car is getting out of the khadda by itself entirely. Thar fans? Yeah. All of you, wow. Hi guys and welcome back to Bike with Girl. I am in God's own country, Kerala for the launch of the Thar Rocks / Thar 5-door जिसके लिए हम सब तड़प रहे थे, बिलक रहे थे 2 सालों के लिए. I think over 2 years. And finally I am with it. In fact मेरे को ना BSA का launch मिस करना पड़ा जहाँ पे आनंद महिंद्रा जी खुद आ रहे हैं क्योंकि भाई थार मेरे अंदर बस चुकी है बहुत सालों से. So I needed to see this. और बहुत सारे लोग मेरे को एक्चुअली इस गाड़ी के बारे में पूछते हैं. सो आई एम हियर टुडे टू टेक यू थ्रू एस्पेक्ट्स दैट आई लव अबाउट द कार एंड एस्पेक्ट्स जो मुझे पसंद नहीं आए अबाउट दिस गाड़ी. ये थार रॉक्स आपको अपने आप खड्डे से बाहर निकाल देती है ऑफ रोड और आपको कुछ नहीं करना पड़ता है. ये देखो. Okay, so guys, you're seeing we're going into a really deep khadda right now, which is full of slush, mud, and a lot of water. So let's go. Let's try this crawl control out. Okay, so here we are in there, really in there. Okay, so here we are now stuck inside that pit. And he's trying to accelerate. कुछ हो नहीं रहा है. The car is not getting out. Now what we're going to do is we're going to turn on the crawl assist. What happens? All feet off the pedals and the car is getting out of the khadda by itself entirely. Same thing for this khadda. I hope the phone doesn't fall. Please see. Legs off the pedal entirely and we are moving forward with zero assistance from our man here. This is so cool. This is for peeps like myself who hate the off-road life and who have zero skill whatsoever. That's me. So crawl assist, that's the feature for you guys now. Nikhil has literally stopped on a busy highway to film the Thar. It's pretty amazing and look, they're actually filming it. That's how much this car is being loved. Yes sir. Here we are going right. Okay sir. Please keep right traffic. थैंक यू. किया गया है इसीलिए पुलिस हमारे साथ भी है ना. तो प्राइस ठीक ठाक है. बट विल दिस एक्चुअली मेक फॉर अ गुड फैमिली कार क्योंकि ये ऑफ रोडर ही बनी थी ना पहले. लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अभी मैं ड्राइवर हूँ, आ जाओ. सो विल स्टार्ट विद द स्टीयरिंग व्हील. इट्स अ नाइस एंड स्पॉटी लुकिंग वन. इस पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे विच हेल्प यू अ लॉट स्पेशली फॉर म्यूजिक एंड पिकिंग अप आंसरिंग फोन्स. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. 2, क्वाइट कैबिन. Brilliant sound system to entertain yourself. I am the kind of driver, I need my volume fully up. And इसमें एक नहीं, 5 नहीं पर 9 स्पीकर मिल जाते हैं. Many speakers here in the cabin, many speakers here for the passengers. And पीछे भी, वहाँ पे कोई बैठा भी नहीं है, पर उनके लिए भी पीछे से वूफर सब कुछ है. Too good. Okay, leatherette seats and the best part is that they are ventilated. Now what I do not like about the ventilated aspect is this is for my ventilation over here and this is for the co-passenger sitting next to me. When I do put this on and it cools the back of my body,
it's a great feeling, but then you start to feel a little chilly after a point, and then you're like, wait, मैंने बंद किया कि नहीं किया? So then you'll go hit it. Like I hit it now, but I'm still feeling very cold, and I'm wondering, भाई मैंने बंद किया कि नहीं? Because you are driving, you are multitasking, you are answering work calls, you are listening to good music. You don't realize कि आपने on किया है, off किया है. And what they should have done is इस पे उनको एक छोटी सी लाइट लगानी चाहिए थी, like here, कि ऑन है या ऑफ है. नाउ आई एम सिटिंग हियर, अभी भी मेरे को ठंडी लग रही है, पर आई थॉट मैंने ऑफ किया है. तो आपका ब्रेन इतना नहीं, वी आर टू स्ट्रेस्ड इन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स टुडे टू रिमेंबर कि हमने वेंटिलेटेड सीट्स ऑन किए थे या ऑफ किए थे. इट गेट्स द बिगेस्ट पैनोरामिक रूफ. अच्छा ये खुल रहा है, अभी खुल रहा है, वेरी नाइस. ठीक है, थोड़ा स्लो है ये खुलने में. I would not put your children out of this or yourselves out of this because it is very, very dangerous. Please read up on it. It's as important as wearing a helmet. Please do not jut your head out. This is only for you to feel the air when you are on a nice drive. Thank you. Issued in public interest. अच्छा भला बड़ा वाला infotainment system है यहाँ पे. It's a 10.2-inch screen and it has a lot of integrated apps, features, everything. It gets Adrenox, which has got 80 plus connected features. Safety wise, it gets 6 airbags. Passenger के लिए lot of leg room. Seriously, I am 5'5.5". Good leg room, and all the tall people जो मैं launch में मिली हूँ, जिससे बात की है, they said good leg room and good headspace as well. So that's very good. Also, you get 2 AC vents at the back and you also get a Type-C outlet over here. So, matlab you're sorted as a passenger, you don't have to worry. And they have taken care of these aspects because यार इसको वो family गाड़ी बनाना चाहते हैं. Period. And then, what is the most important thing when you're traveling with family? To have storage space. The 3-door had barely any storage space. This has increased a lot in the 5-door, as you can see. ठीक है? मैं थोड़ा सामान डाल देती हूँ जो भी मेरे पास है, जस्ट टू गिव यू अ सॉर्ट ऑफ आइडिया. ठीक है, तो उसको मैं पूरा अंदर डाल देती हूँ. यहाँ पे सॉलिड जगह है. सो नंबर्स वाइज आपको 477 लीटर्स मिल जाते हैं अप टू द बैकरेस्ट, और 600 and something 650 या कुछ लीटर्स मिल जाते हैं ऑल द वे टू द टॉप, विच इज़ अ लॉट. तो लाइक द 90s, one person can sit at the back also easily. पर जेनजी तो बैठेगा नहीं पीछे, मुझे पता है. बट फिटिंग वाइज you can put big bags. My gear bag is going to fit here very, very nicely. It is too tall, so it'll have to come down, or definitely it'll have to come down horizontally. But यार मेरे को एक use आया है कि plants, when you're moving homes, plants are something I hate to give the truck wala, because I'm like, he doesn't care, इधर उधर होके मर जाते हैं. I always move my plants myself, and this is the perfect boot for that because it is tall and you will be able to fit your plants in nicely. एक टाइम जब मैं घर बदलूंगी तो थार के साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर बदल सकते हो जी. वन इशू दैट आई सी विथ दिस कार इज़ दैट ये इसका पूरा इंटीरियर वाइट है और हम रहते हैं इंडिया में. आज मुझे वाइट स्नीकर्स पहनने थे टू गो विथ माई मैचिंग वाइट स्ट्राइप्स ऑन माई पैंट्स, बट आई सेड नो. ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में चीज़ें गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं. अभी ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक दिन की भी नहीं होगी, और कल वॉक अराउंड्स जब हुए थे, लोगों के पैर के निशान, हाथ के निशान, खाने के निशान सब आ गए हैं सीट पे. नाउ these are leatherette seats, there is no fabric on them. So today in the press conference, Pratap from the Mahindra design team said, अरे there is no problem whatsoever, आपको बस पानी लेना है, क्लॉथ लेना है, मेरे पास टिश्यू है, और you can wipe it down. So I'm going to try that for the first time in front of you, क्योंकि this is an important thing for us to kind of see. क्योंकि अगर ये निकल जाता है, we're sorted. I don't think there's any issues with this white interior. सब लोग पागल हो रहे हैं white interior में. Here I am going a little whatever. Okay. As you can see the stain. कपड़ा गीला है. Let's go. I'm going to go for this one. Okay. So that could probably not be dirt, that could probably be grease or something, I don't know. We'll try this. ये dirty लग रहा है मेरे को. Okay, that's good. ये निकल रहा है.
और ये रह रहा है ना, थोड़ा इसको मेहनत करनी पड़ती है, बट इफ़ यू सी द इशू इज़ कि इट्स नॉट फुल्ली कमिंग। ये निकल गया अच्छी तरह से, ये भी निकल रहा है, नॉट बैड नॉट बैड। सो मेरे को होप नहीं था, मेरे को लग रहा था कि क्योंकि यू नो वाइट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कलर, जहाँ पे हमारे स्नीकर्स जब गंदे हो जाते हैं इट टेक्स मी फॉर एवर टू क्लीन देम, और कोई निशान तो जाते भी नहीं हैं। सो ऑन दिस सीट आई बीन एबल टू टेक आउट प्रीटी मच एवरीथिंग, बट ये जो ग्रीस का मुझे लग रहा है निशान है वो ईजिली नहीं निकल रहा है। ये प्रॉब्ली थिनर से या कोई और क्लीनिंग लिक्विड से निकालना पड़ेगा, बट दिस इज़ अ गुड साइन। ये फुल ऑप्शन है ना? हाँ फुल ऑप्शन हाँ, है। ये फुल ऑटोमेटिक डीजल है ये वाला। मेरे हिसाब से ये कलर में अच्छा वाइट है। नहीं नहीं, अंदर हाँ, अंदर। I am driving the diesel automatic today, which honestly is super easy to drive, man. I am such a manual girl. मैंने अपनी ड्राइविंग जो है मैनुअल पे सीखी है. The car that I drive is a manual. So this is like a game. In fact, आज मैं ना पूरा टाइम लोगों के साथ रेस कर रही थी. I was like, you know how we target a person. I was targeting all the older Thars. I was like, Thar. Then coming close to them, looking at them and going boom. I'm sure they're going to recognize, if they're watching this video, they're going to be like, हाँ यही थी वो. And then I just disappear because this engine is so peppy, right? And this 2.3 liter diesel engine particularly is nice and responsive. The throttle response is really good. So like yesterday I was on a straight stretch listening to some banger music on the 9 speakers in this car, and you don't realize, like, this is where my problem arises though. Like, look at this. Okay, screwed. The bounce, right? That ladder frame, there you go again. So if you do not brake in time, you're like doing a nice jumpy castle situation, okay? But then again, it is an SUV. You cannot be expecting it to be as what? You know what I'm saying, right? So the bouncing castle scene does happen on bumps, especially on a tarmac, nice stretch of road, when a sudden pothole will come, yeah, broken tarmac happens, cracks, all of that. That is bound to happen when you're sitting in the Thar rocks. But the one good thing is when you're in, you know, like in an off-road situation, and you're like, dude, this thing soaks it all in so well. Oh my god, I loved the suspension off-road. And even though I know that this is inherently a family car that Mahindra is trying to, you know, kind of push it as, with the whole 5 seats and everything, but seriously, off-road, this thing is awesome. I mean, we've done a little bit of the experience yesterday, and really it just soaks it all in so nicely. And then the level of tech that you get in the price, like this kind of price, is insane, right? Look, so I'm just gonna, there's a whole bunch of tech. I'm gonna pick out the things that I feel would really help with you sitting with your family in the car. Things like level 2 ADAS. Now, yesterday when we were in the car and I was having a conversation with my DOP, the speed limits kept popping up over here, which I thought was so helpful, because, you know, when you're having a conversation with your family in the car and a 60 zone is popping up, it's telling you that, then it's telling you when the 60 zone has ended. It really helps, because when you're having a conversation, it's very hard to concentrate on the 60 and the 40 and all of that. But when it's telling you that on the car because of the ADAS, it's pretty amazing. And to experience it firsthand yesterday was damn good as well. And then things like the 360-degree camera, which will transparent your bonnet, just so you can see things like rocks and other obstructive things that may be under your car or around it. So cute. ये स्टार्ट होता है 12.99 lakhs. मिला रेंज मिला. They call me a god.
it's a statement for me to make, right? Because हमारा पेज जो है इंस्टाग्राम पे 1.8 मिलियन का पेज है. It's a big statement to make, but मुझे अंदर से लग रहा है कि दिवाली आने वाली है, हमारे फेस्टिवल्स शुरू होने वाले हैं. As families, we all go for a lot of new vehicles. A lot of people exchange their cars, buy new cars. मुझे सीरियसली लग रहा है कि ये गाड़ी बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, बहुत सारे. क्यों? बिकॉज इसका प्राइस बूम्बास्टिक है ब्रो. 12.99 lakhs एक्स शोरूम, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि महिंद्रा इज लुकिंग एट मेकिंग दिस अ प्रॉपर फैमिली कार. इट इज ऑलरेडी विद दिस प्राइसिंग किल्ड इट in the mid SUV segment. This is वो लोग नहीं चाहते हैं कि थार सिर्फ एसोसिएट हो ऑफ-रोडिंग के साथ. They want to do more with this car. And a family car, 5 seats, perfect family car. ये इनके मन में चल रहा है, मुझे समझ गया. Okay guys, आपको कैसी लगी थार 5 door? Please बताना comments में. And for anybody that's looking for a Thar or for a car in this kind of budget, 12.99 lakhs एक्स शोरूम ऑनवर्ड्स, ये वीडियो ज़रूर दिखाना यार उनको, या फॉरवर्ड कर देना. यू डोंट हैव टू गो एंड शो टू देम, व्हाट्सएप पे भेज दो. आई मीन फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट इज़ ग्रेट फॉर दिस कार, पर मुझे ना ये मन में मेरा एक कीड़ा आ रहा है. यू नो मी, आई एम ऑल अबाउट द कीड़ाज एंड आइडियाज़. वो मुझे करना है. मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर ये देख के कोई आइडिया चुरा लेगा यार. हुआ है मेरे साथ. बट yeah, the Next Thar video I do would be something that might kind of blow your mind. So let's wait for that. Until then, don't forget to subscribe. Subscribe. Okay, subscribe please. Share the video and love it, yaar. Give some love to this person here, please. Thank you. Jai Hind.